Hi guys, my name is Raghav. I'm a fellow analyst and a stock investor. So आज का वीडियो थोड़ा शॉर्ट एंड सिंपल रहेगा जिससे मुझे आपको कुछ चीज़ें समझानी है एंड आई नीड टू मेक यू अंडरस्टैंड सम थिंग्स इन द मार्केट दैट आर गोइंग ऑन राइट नाउ. सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट. आज के वीडियो में हम मार्केट सेंटिमेंट्स एंड द मार्केट इटसेल्फ के बारे में बात करेंगे कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे पहुंच रही है, दे आर रीचिंग न्यू हाइज एंड इज देयर एनीथिंग टू बी वरीड अबाउट, इज देयर एनीथिंग that could change in a span of like few months or a few days. देखिए मार्केट को मैं प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता बट आई वुड श्योरली गिव माई पर्सपेक्टिव ऑन इट. तो पहले लेट्स टॉक अबाउट द मार्केट्स. निफ्टी इज राइजिंग, सेंसेक्स इज राइजिंग. इसका सिर्फ एक ही रीजन है, इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है. द कंट्रीज इकोनॉमी, द जीडीपी इज ऑन अ कंटिन्यूस राइज एंड इवन द IMF, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, sees India as a bright spot for the global economy. So there is no need to question this rise क्योंकि एक सिंपल फंडा है, जैसे इकोनॉमी बढ़ती है वैसे द मार्केट्स ऑल्सो इंक्रीज एंड जैसे ही उस इकोनॉमी के अंदर नए प्लेयर्स आते हैं, मार्केट्स में इन्वेस्ट करने वाले नए प्लेयर्स आते हैं, द पूल ऑफ मनी दैट गेट्स इन्वेस्टेड इनटू द मार्केट्स ऑल्सो इंक्रीजेस. So there is going to be a legitimate rise in this all scenario. The number of demat accounts that opened rose to 11 crores in January 2023 compared to 8.4 crores in the previous year, implying an increase of about 31%. But the astonishing fact is that less than 10% of India's population is currently involved in the stock market compared to US, जिसकी around 61% Americans are being currently invested into the stock markets, that they own the stocks of the companies. So आप समझ रहे हो कि the increase in the demat accounts is giving a rise to the economy. Sentiments of the newcomers, impulsive buying, impulsive selling, they are currently involved into that. So there is a legitimate reason behind this because India की economy is supposed to grow and the levels are meant to be broken so that economy can grow, and that is what is going to happen. So there is no need to doubt the rise in the market because new players are engaging, and that is what comes to the next part of this video, that is the sentiment that the market is in right now. So कुछ लोग यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस एंड कुछ मार्केट में यूज करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, and there is a third kind of category that uses nothing. Both of these are irrelevant to them. They are just entering the market for the sake of it. वो सिर्फ घुस जाते हैं अपना पैसा लगाने के लिए एंड उसी की वजह से दे सफर लॉसेस एंड दे ब्लेम द मार्केट फॉर इट. दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू. यू शुड कैलकुलेट योर रिस्क. आपकी जो रिस्क है उसको कैलकुलेट कीजिए, कितना आप लूज कर सकते हैं उसको भी कैलकुलेट कीजिए एंड बेस्ड अपॉन प्रोफेशनल टिप्स यू शुड बाय स्टॉक्स एंड स्टडी द कंपनी. आप फ्री टाइम में बैठे हो, सिर्फ पैसे लगाने से मतलब नहीं है. यू शुड स्टडी द कंपनी, सी इट्स हिस्ट्री, प्रॉफिट बना रही है कि नहीं बना रही, रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही, दे आर इनोवेटिंग और नॉट, दे आर गेटिंग सम न्यू प्रोडक्ट्स इनटू द इंडस्ट्री और नॉट, उनके प्रोजेक्ट्स आ रहे कि नहीं आ रहे, गवर्नमेंट की बैकिंग है कि नहीं है. देयर आर वेरियस न्यूज़ दैट गोज अराउंड. यू शुड चेक दीज न्यूज़ एंड बेस्ड अपॉन दैट क्रिएट अ इकोसिस्टम वेयर यू कैन इन्वेस्ट. अपना एक खुद का मेथड बनाइए जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड उससे आपको आपके फायदे भी दिखेंगे. देयर माइट बी सम लॉसेस एज वेल. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ फायदा होएगा आपको, बट आपको आपके खुद के बिलीफ के ऊपर होएगा दैट व्हाट यू आर डूइंग इज राइट और रॉन्ग. फिर आप उसको बेंड कर सकते हो, आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजीज बना सकते हो उसके बेसिस पे. सो आप ये भी सोच रहे होगे कि मैं एक 19 साल के लड़के से ये सब चीज़ों के बारे में क्यों पूछूं और क्यों मैं इनसे इनके वीडियोस देखूं, क्यों मैं इनसे समझूं. तो मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि इंडिया के अंदर जो मार्केट के अंदर अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, दोज आर द बिलो एज ऑफ 30 पीपल. उनका एज ग्रुप मेरे एज ग्रुप के अंदर लैंड करता है एंड आई अंडरस्टैंड द माइंडसेट दैट दे शेयर. सो व्हेन यू लिसन टू पीपल विद द सेम माइंडसेट, विद द सेम एज ग्रुप, वही बिहेवियर पैटर्न्स, वही ट्रेड बिहेवियर जब उनके अंदर होते हैं, I might be able to give you a better insight towards it as well. You can always go to professionals. I'm not saying that आप मेरी बातें सुनो. You can always have a second opinion. You can always have people trying to tell you about the market. There are far more professional people and I might be just a minor person who is in this market.
But yeah, I am in the age group. I'm trying to give that knowledge to you as well. So the age group that we are sharing, that is very impatient. उनको प्रॉफिट्स अगर दिखते हैं तो वो 1 मिनट में सेल करते हैं. व्हेन दे आर ग्रीडी फॉर प्रॉफिट्स. बट जब उनका स्टॉक गिरने लग जाता है, व्हेन द सेल, वो सेल का जो आइकन है वो उन्हें दिखता है when the profits are rising and when their stocks might be making a loss, वो 1 मिनट में क्लिक होता है, 1 मिनट में. सो उसी के वजह से इतना इम्पेशेंट है मार्केट. एकदम से राइज होना, एकदम से गिरना, स्टॉक्स एकदम से राइज होना, स्टॉक एकदम से गिरना. That is majorly because of the impatience that the age group contains or the impatience that the market sentiment is showing right now. मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि don't just invest your money ऐसे ही. Make some researches and please study your stocks, study your scripts that you are choosing, because these are some minute and important details that you should know about the stocks that you're buying. आपका पैसा कहाँ लग रहा है, आपको उस चीज के बारे में बिल्कुल सही नॉलेज होनी चाहिए. मैं भी जब 4 साल पहले इस मार्केट के अंदर आया था तब मेरे साथ भी ये हुआ था. आई यूज्ड टू गो ऑन द बेसिस ऑफ सम रैंडम टिप्स एंड उसकी वजह से मैंने भी बहुत सारे लॉसेस किए. बट आफ्टर स्टार्टेड रिसर्चिंग, आफ्टर आई स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट दीज कंपनीज, I got to know more about the market sentiment. I got to know about the market itself, the psychology of the people there. So आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, do your research so that you have some credibility towards yourself. When you pick the stocks and वो stocks बढ़ते हैं, then you are proud of your analysis. They give you a bit of confidence and that is what is important. इस market के अंदर सिर्फ एक ही sentiment है, the sentiment of confidence, the confidence that you share towards these stocks that you pick. So इसी की वजह से एक trade pattern बन चुका है where people are just investing and they are impatient towards losses or gains. And जब तक आप अपने stop losses, people, this is the most important thing that I say to everyone. If you don't maintain your stop losses, it can cause you a lot of trouble. Always maintain your stop losses, always get your targets clear. उसके वजह से ही आप मार्केट के अंदर स्टे कर सकते हो. इफ यू थिंक दैट कि एक स्टॉक गिरते जा रहा है, आप उसको एवरेज करते जा रहे हो, यू आर जस्ट बाइंग द स्टॉक्स. मैं आपको एवरेजिंग का भी मतलब समझाऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में. बट अगर आप उसको एवरेज करते जा रहे हो एंड वो स्टॉक गिरते जा रहा है, देयर माइट बी अ टाइम दैट स्टॉक कैन कंप्लीटली बी ऑफ नल वैल्यू. सो प्लीज डोंट डू दिस. मेंटेन योर स्टॉप लॉसेस, मेंटेन योर टारगेट्स पे पहुंचे, सेल देम. If you can see other potential, set new targets. That is always a thing to do. And प्रोफेशनल्स की बात सुनिए, प्रोफेशनल के वीडियोस देखिए, उनसे क्वेश्चंस करिए. देयर आर वेरियस ऑफ पीपल ऑन यूट्यूब दैट आर शोकेसिंग नॉलेज. उनसे कमेंट्स के अंदर पूछिए एंड व्हाट इज द रीजन पूछना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप उस रीजन को नहीं समझोगे तब तक आपको भी भरोसा नहीं होगा उनके उस टिप्स पे. तो इसी के साथ हमारा वीडियो एंड होता है. दिस इज द वीडियो वेयर आई टॉक्ड अबाउट द मार्केट्स एंड द मार्केट सेंटिमेंट राइट नाउ. एंड अगले वीडियो में वी विल टॉक अबाउट द ट्रेड स्ट्रैटेजीज दैट यू माइट अप्लाई इन 2023, mid 2023.